أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. Jazakallah, mashallah. Thank you so much, Mr. Usman. This is your own teacher, the Rashid, gives you an enthralling and enthusiastic welcome into another video session of grade 8M. And in our previous session, we had just talked about, it was a very interactive session in which we had exchanged the thoughts of, I showed you some pictures, you made guesses, we interacted with each other, then I showed a video, and then we had conversated with each other. And that video was all about, that session was all about dialogue and dialogue writing. And in today's session, as you guys can see on your screens, we are going to talk about dialogues. Okay, dialogue writing. In this video session, we are going to decipher, we are going to learn how to write an effective dialogue. Dialogue writing. What is a dialogue? First of all, what is a dialogue? The question arises in our mind. So there are a lot of things that when we watch cartoons, movies, any web series, or any TV series, or any TV show, or in general, when we talk with each other, wherever we go, whatever we say, the way we communicate, whether we are writing to someone, whether we are speaking or listening someone, speaking to someone or listening someone, we exchange dialogues. Definition: dialogue is conversation in a story or anytime something is said aloud. In general, dialogue is conversation. In general, dialogue is what? It's conversation in which we exchange our thoughts. I'll give my thoughts to the others and the others will do let me know. मैं अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता हूँ, अपनी बात अपने एहसासात, ठीक है, और दूसरे अपनी बात मुझ तक पहुंचाते हैं, अपनी फीलिंग को, जज्बात और एहसासात को. That is what dialogue is. ठीक है, when you write dialogue, you're stating a person's exact words. और जब आप dialogue लिखते हैं तो आप actually क्या करते हैं, किसी भी शख्स के जो exact words होते हैं आप उसी को quote करते हैं. Like we read in the novel Wuthering Heights that Amalie said, "What's out there? Like I don't want to go back home." Like that. We have read a lot of dialogues. In novels, we usually have these dialogues. We have characters. Whatever they say are dialogues. जितने भी कैरेक्टर्स हम किताबों में पढ़ते हैं वो जो कुछ भी कहते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स उनके डायलॉग कहलाते हैं. ठीक है, तो हम इस पे बात करेंगे. अच्छा, in general, when we talk about dialogue, dialogue is not only something, it's a kind of writing. It is actually a whole career, I would say. ये dialogue writing एक आम सी बात नहीं है, पूरा career है. लोगों का career बनता है. आप movies देखते हैं, drama serials देखते हैं, web series देखते हैं, और अब तो बच्चों जिस दौर में हम आ चुके हैं माशाल्लाह से, अब आपको टैलेंट एग्जीक्यूट करने के लिए प्लेटफॉर्म बहुत सारे मुयस्सर हैं. इफ यू आर टैलेंटेड, यू कैन एग्जीक्यूट योर टैलेंट. एंड ओवर देयर, लेट्स टॉक अबाउट द मूवी राइटिंग और समथिंग. तो मूवीज में स्क्रिप्ट्स जो लिखे जाते हैं उनमें डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ऐसी कई मूवीज आपने देखी होंगी. ऑब्वियसली आवर मेन लैंग्वेज इज उर्दू, so you must have seen a lot of movies in which there were a lot of dialogues which you remember. आपको काफी अरसे तक याद रह जाते हैं. That's the power of a dialogue. कि वो ना सिर्फ डायलॉग आपको याद रहता है बल्कि एक कैरेक्टर याद रह जाता है आपको डायलॉग से. आप प्ले स्क्रिप्ट लिखते हैं, आप कोई प्ले कर रहे होते हैं, परफॉर्म, आप कभी किसी आप कह सकते हैं बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके करते हैं, या द वे यू डिलीवर द डायलॉग. व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, what expresses in the dialogue, what is being expressed in the dialogue matters the most. क्या कहा गया डायलॉग में बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप लिखने की बात करते हैं. और जब बोलने की बात करते हैं तो जिस अंदाज में डायलॉग को execute किया जाता है, that is very important. So in general, dialogue is actually a whole career, I would say. कितने ही लोग हैं जो के मूवीज हैं, अभी जैसे हमारे यहाँ पे सीरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है दुनिया भर में, अर्तुगरुल. उसमें बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, मुख्तलिफ लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया है. तो वो ट्रांसलेशन के लिए भी डायलॉग स्किल्स चाहिए होती हैं. आप उनको ट्रांसलेट करते हैं डायलॉग्स के तौर पे, ठीक है, आप उनको एज ए जनरल स्क्रिप्ट नहीं करते, डायलॉग के तौर पे इसको क्या करते हैं, आप ट्रांसलेट करते हैं. और फिर वो जो वॉइस ओवर देने वाले लोग होते हैं, वॉइस ओवर मैन ऑफ अ मैन, they actually do a lot of practice to make the voice like that. आप बहुत सारे डब्ड कार्टून्स देखते हैं, whatever they, so that's a career. पूरी दुनिया में इसका करियर माना जाता है.
You can be an RJ with it. You can be a host with it if you have good dialogue deliverance. What is the purpose of writing dialogue? As I told you that dialogue makes a story more interesting. It can reveal what a character thinks or feels. देखिए मैं कोई कहानी सुनाता हूँ मिसाल के तौर पे आपसे. Let's take an example that I'm telling a story in which I am saying everything at my own. मैं सारी बातें खुद कह रहा हूँ, वो वहां जाता है, फिर ऐसा होता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है. इंटरेस्ट इतना आपका नहीं बनेगा जितना जब मैं बताऊंगा कि ये कैरेक्टर वहां पहुंचता है, ये कैरेक्टर उससे ये कहता है. तो हर बंदे का अपना पार्ट. तो आप बिल्कुल ऐसे ही ले लें कि एक मूवी आप देखें जिसमें एक पूरा कैरेक्टर शुरू से एंड तक हो लेकिन उसका एक भी डायलॉग ना हो. You would be totally like surprised that why did this has happened. क्यों ये जो राइटर है उसने ऐसा किया है कि बगैर डायलॉग के पूरा कैरेक्टर. इट्स अ टफ थिंग. ठीक है. That is an old thing when we did not when camera and I would say microphone were not synchronized together. जब बेआवाज फिल्में बनती थी like Charlie Chaplin and all those, उस जमाने की बात अलग है. लेकिन अब आप देखें डायलॉग से क्रिज्मा आता है. डायलॉग से स्टोरी अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी स्टोरी पावरफुल हो जाती है. अगर आप कोई नॉवल लिख रहे हैं तो आपका नॉवल जो है वो पावरफुल हो जाता है. अगर आप कोई प्ले लिख रहे हैं तो आपके प्ले का कैरेक्टर अगर बहुत सॉलिड है, उसके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, अकॉर्डिंगली हैं. ठीक है. अगर मिसाल के तौर पे कोई बहादुर बंदा है तो उसके डायलॉग से बहादुरी नजर आनी चाहिए, उसकी बातों से बहादुरी नजर आनी चाहिए, एक्सप्रेशंस होने चाहिए. ठीक है. इट ऑल्सो शोज व्हाट अ कैरेक्टर्स लाइक पर्सनालिटी. मैंने यही बताया आपको. डायलॉग से कोई भी कैरेक्टर जो कहानी होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है. कभी कभी आपने देखा होगा कि स्टोरी लाइन बहुत ही कोई सिंपल होती है लेकिन जो डायलॉग्स होते हैं वो किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं और या उसको किस तरीके से डिलीवर किया गया है. If you have seen guys the Batman trilogy, I would say, in which the second one was Batman. The first one was Batman Begins. The second one was The Dark Knight. In The Dark Knight, there was a character who got died before the release of the movie a month ago, and he was awarded, I would say, if I'm not wrong, Oscar award for his character. That is Joker. आपने वो जोकर का कैरेक्टर अगर आप में से किसी ने देखा हो बैटमैन में, बैटमैन की जो ट्रियोलॉजी सीरीज आई थी उसमें उसकी डायलॉग डिलीवरेंस ने उसको बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि पॉपुलर बनाया था. देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स. आई जस्ट गेव वन व्हिच इज वेरी पॉपुलर and these days it's a very overwhelmed character that people try to be like. Why? Because the dialogue and the deliverance made that character really powerful. So dialogue writing is actually an art, I would say. आप पूरी मूवी में डायलॉग लिख सकते हैं. स्क्रिप्टिंग एक पूरा आप कह सकते हैं काम है. आपको किसी ने किसी ड्रामे की कहानी बताई है, उस कहानी में स्क्रिप्ट में डायलॉग्स होते हैं. जितनी भी मूवीज और ड्रामाज आप लोग देखते हैं उन सब में डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट. अब हम आते हैं भाई डायलॉग्स लिखने कैसे हैं. अब लेट्स टॉक अबाउट within the reach, within the access of the school. Within the access of the school, what you could do with dialogue writing, you could do your plays, you could do some drama scripts and all that. How to write that? I give you a lot of times to write dialogues, but there are very few stories that we had presented to me were full of expressions. ये बात हम सबको नहीं भूलनी चाहिए that English is not a subject. It is a language. It is a international language. It has become, which has been taught as a foreign language into many countries like Pakistan. We learn it as a second language. So why do we forget when we learn English that it is a language? I have seen a lot of students when they deliver their dialogues, they are emotionless. They do not have a feeling when they've been uttered. जब dialogues कहे जाते हैं तो उसमें ऐसा लगता है like, oh my uncle has passed away. Oh really? Oh, I'm really feeling sorry for it. Oh, do you know that my father got a promotion? Yes, I got it. It's like that. We do not have that expression. Oh, I'm feeling really very sorry that your uncle has passed away. Oh, thanks a lot for your condolences. Okay, like that. And that's what, oh, wow, my father got a promotion. That's what the expression comes. So how to write these expressions? अब बोलने की हद तक तो expressions है ना, लेकिन लिखेंगे कैसे? उन expressions को लिखते हुए हम क्या-क्या चीजें करते हैं, क्या rules हैं, grammar में कहाँ-कहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है, इस पूरे इसमें हम ये decipher करने वाले. When writing dialogue, start a new paragraph each time the person speaking changes. That's what you know, or we all know that.
When writing dialogue, start a new paragraph each time the person speaking changes. देखें हम क्या करते हैं, हमेशा दूसरी लाइन से क्या करते हैं, लिखते हैं. मिसाल के तौर पे अब Wuthering Heights की अगर हम बात कर लेते हैं, Mr. Earnshaw said to Henley. So Mr. Earnshaw said to Henley, why did we beat Heathcliff? Full stop. And then we'll skip it, like then we'll write from the next line, not from next to the where the sentence was ended. जहाँ sentence खत्म हुआ है उसके आगे से नहीं लिखते, बल्कि हम next line से लिखते हैं. तो ये पहली बात आपको समझने की है, that we write each speaker's dialogue in a fresh line. Example: hey, come over here, you all, called Jill to her friends as they got out of the car. Hey, come over here, you all, called Jill. Jill ने अपनी friend से कहा जब वो बाहर निकले कार से, hey, come over here, you all, like that. ये पूरी बात जो कही गई है, that's what is in a fresh line. Sorry, we are late. Apologized Annie as she and Martha hurried toward Jill. Okay? Sorry, we are late. हमें ताखीर हो गई. Apologized Annie as she and Martha hurried toward Jill. That's what the reply of the question when Jill had asked her friends to come out. So Annie and Martha said that they were in a hurry. Okay, that they were getting late. Rules for the spoken words. The speaker's words should be set apart from the rest of the sentence with quotation marks. ये भी बात आपको पता है, जब हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखें पिछले वाले एग्जाम्पल में, hey, come over here, you all, इतनी सी बात जिल ने कही थी और बाकी जो लिखा हुआ है उसके अलावा ये सिचुएशन बताई जा रही है. Call Jill to her friends as they got out of the car. जैसे ही वो कार से बाहर उतरे तो जिल ने अपने दोस्तों से कहा, hey, come over here, you all. तो जो उन्होंने डायलॉग कहा, एग्जैक्ट वर्ड है, ये डायलॉग है हमारा. ये जो hey, come over here, you all लिखा है, ये हमारा डायलॉग है. और ये एग्जैक्ट वर्ड किसमें लिखा हुआ है? इन्वर्टेड फॉर्म. Sorry, we are late. Apologize, Annie, as she and Martha hurried toward Jill, like that. So sorry, we are late. इसमें ये हमारे पास डायलॉग है और उसके बाद क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है. Like यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है. How do you do? Asked Alan. Ask Alan is something out of that. Whatever is the dialogue has to be written in quotation marks. ये single quotation mark भी हो सकते हैं और double भी हो सकते हैं. It's a pair of comma. तो अगर दो कॉमा मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी हम दो ही लिखेंगे. ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ हमने एक कॉमा लगाया है और यहाँ पे हम दो लगा दें. ठीक है, it's like a pair of comma. When you're taking one, you'll have to apply single comma each side, both side, or at the start or at the end of the dialogue, or you have to come up with double commas. Okay, so what we are talking about here, we have rules for punctuation. We talked about that a dialogue has to be written in a fresh line. Then we've talked about that the dialogue, the entire dialogue has to be written exactly and has to be written in inverted commas. Rules for punctuation. Do you know what is punctuation? The scientific, I would say, the scientific use of symbols in writing. In English is known as the punctuation. आप कौन से सिंबल को कहाँ पे कैसे यूज करते हैं राइटिंग में, क्योंकि याद रखिएगा पंक्चुएशन हम बोलते हुए कभी भी यूज नहीं करते. लाइक आई वोंट से आई वांट टू टॉक टू यू, फुल स्टॉप, वेयर वर यू, क्वेश्चन मार्क, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, एक्सक्लेमेशन मार्क. हम कभी ऐसे बात नहीं करते. ऑलवेज टॉक इन अ वे दैट एक्सप्रेशंस आर शोन. सिंबल्स क्यों होते हैं? पंक्चुएशंस कहाँ पॉज करना है और कहाँ नहीं करना ये बताने के लिए होते हैं. लाइक स्टॉप, डोंट गो, stop, don't go, like that. नहीं, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ. अब मैं मुझे किसी को रोकना है तो मैं क्या कहूंगा? रुक. ठीक है, मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा रुको मत जाओ, यही कहूंगा ना, रुको मत जाओ. रुको, यहाँ पे पॉज आएगा, मत जाओ, यानी रुको के बाद कॉमा लगाऊंगा. रुको मत जाओ. और किसी को अगर मुझे भगाना होगा तो मैं सेम ही जुमला कहूंगा लेकिन कॉमा कहीं और लग जाएगा. रुको मत, कॉमा जाओ, यानी रुको मत, डोंट स्टे, गो, stay, don't go, like that. That's the difference. समझ आ रही है आपको बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पंक्चुएशन मार्क्स के, कहाँ पे आपको क्या ऐड करना है. अगर आपने कॉमा गलत जगह ऐड कर दिया, रुको मत जाओ के बजाय रुको मत जाओ, तो बात रोकने के बजाय भगाने की हो जाएगी. ठीक है, एग्जाम्पल, look at that. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, place and punctuation inside the quotation marks. Place and punctuation inside. देखें आप, begin the first word of the spoken part with a capital letter. पहली बात की जा रही है कि जब कभी भी आपको डायलॉग स्टार्ट करेंगे उसका जो फर्स्ट
word है उसका first letter capital होगा, you all know that. Place end punctuation inside the quotation marks. और end punctuation होता है कुछ ना कुछ. अगर आप simple sentence लिख रहे हैं तो full stop होगा, exclamation लिख रहे हैं तो exclamation mark होगा, question है तो question mark होगा. तो आपको capital से start करना है और किसी आप कह सकते हैं quotation mark पे end करना है. Inside the quotation marks, place end punctuation. End punctuation का मतलब समझ रहे हैं आप? End punctuation का मतलब है ये. यहाँ क्वेश्चन मार्क भी हो सकता था, यहाँ पे फुल स्टॉप भी हो सकता था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कैपिटल से स्टार्ट करना है और एंड जो करना है वो किसी भी पंक्चुएशन मार्क से करना है. मोर रूल्स. अ कॉमा सेपरेट्स द स्पीकर टैग फ्रॉम द स्पोकन वर्ड्स. देखें, कॉमा हम क्यों लगाते हैं, ताकि हम जो स्पीकर है उसकी बात को, जो उसने कहा है, उसके स्पोकन वर्ड्स हैं, यानी कि जो उसका मैसेज है, उससे उसको डिफरेंशिएट किया जा सके. द डॉक्टर स्टेटेड, डॉक्टर ने कहा, थिंक यू विल फील बेटर सून. अब जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे, अगर मैं आपको समझाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखेंगे हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा है, ये हमारा डायलॉग है. ये एंड किससे हो रहा है, फुल स्टॉप से हो रहा है. और अगर मैं बात करूं तो सब के अलावा ये जो चीज बची हुई है यहाँ पे, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, दैट इज द डॉक्टर स्टेटेड. ये क्या है, स्पीकर टैग है. ये क्या कहलाता है, सेपरेट द स्पीकर टैग फ्रॉम द स्पोकन वर्ड. यानी स्पीकर ने जो कहा है, मिसाल के तौर पे बिलाल सेड, आई डोंट वांट टू स्टडी इंग्लिश, लाइक दैट. सो बिलाल सेड इज एक्चुअली द स्पीकर्स वर्ड्स, और जो उसने कहा है, जो उसका मैसेज है, वो क्या, आई डोंट वांट टू स्टडी, लाइक दैट. तो जो चीज इन्वर्टेड कॉमा में होती है वो मैसेज होता है, वो डायलॉग होता है. ठीक है, और जो उसके अलावा होता है उसे टैग कहते हैं या डायलॉग डिलीवरेंस होता है. तो इन दोनों को हम अलग करते हैं इस वाले कॉमा के साथ. इन दोनों को हम किससे अलग करते हैं, इस वाले कॉमा के साथ. अगर ये कॉमा आपको अलग करना है मिसाल के तौर पे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप देखें ये कॉमा अलग कर रहा है स्पीकर को, ये पहले भी आ सकता है बाद में भी. एग्जाम्पल, द पेशेंट रिप्लाइड, आई होप आई विल रिकवर सून. देखिए, द डॉक्टर स्टेटेड, आई थिंक यू विल फील बेटर. The doctor stated, I think you will feel better soon. Example, the patient replied, I hope I will recover soon, like that. डॉक्टर ने क्या कहा, I think you will feel better soon. आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे. The patient replied, I hope I will recover soon. हाँ, मुझे उम्मीद है मैं बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाऊंगा, like that. Rules continued. The spoken words are sometimes interrupted in the middle and the first part of the spoken words with quotation marks. Begin the second with quotation marks. Use commas to separate the spoken words from the tag. बहुत सिंपल है. यहाँ पे देखें, अब तक हमने बात की, इसमें एक डायलॉग था और एक स्पीकर था. लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए कि स्पोकन वर्ड्स आर इंटरप्टेड इन द मिडल, स्पोकन वर्ड जो होते हैं वो मिड में इंटरप्ट कर देते हैं. मिसाल के तौर पे शुरू में हमारे पास डायलॉग है, बीच में क्या है हमारे पास, बीच में हमारे पास आ गए हैं क्या, स्पोकन वर्ड्स आ गए, यानी जिसने कहा है. ठीक है, लाइक दैट. डू यू रियलाइज, आस्क व्हाट, दैट वी फॉरगॉट द राफ्ट. Do you realize that we forgot the raft? ये अलग अलग चीजें हैं ना, ये एक ही बात है. Do you realize that we forgot the raft? तो इसको हम ब्रेक करके भी लिख सकते हैं. कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बात समझिएगा थोड़ा सा. Do you realize, अगर मैं do you realize that we forgot the raft? क्या तुम्हें ये अच्छा, क्या तुम्हें एहसास है कि हम जो है अपना राफ्ट भूल गए हैं. ये जुमला सिंपली भी कहा जा सकता था, लेकिन इस जुमले के मिड में एक इंटरप्शन आ गई, एक इंटरवेंशन आ गई है. दैट इज व्हाट, इसने दोनों पार्ट को अलग कर दिया. डू यू रियलाइज, आस्क रॉड, क्या तुम्हें एहसास है, रॉड ने पूछा, दैट वी फॉरगॉट द राफ्ट, कि हम क्या भूल गए हैं, हम राफ्ट भूल गए हैं, लाइक दैट. इट इज टू लेट नाउ, आई सेड विल हैव टू कम बैक. इसको यूं भी कहा जा सकता था, आई सेड इट्स टू लेट नाउ, विल हैव टू कम बैक later, like that. इसको साथ में लिखा जा सकता था, लेकिन इसको ब्रेक किया गया है. और इससे क्या होता है, that defines your story much better, like that. It's too late now, I said we'll have to come back later. A sample dialogue, we talked about that. I'll revise about the all the rules that we've talked about. A sample dialogue. Okay, and this dialogue is from nowhere but from your favorite part, that's Wuthering Heights. An extract from Wuthering Heights it is. You can see.
He had a son, it seems. Yes, he had one. He is dead. That young lady, Mrs. Heathcliff, is widow. Yes. Where did she come from originally? Why, sir, she's my late master's daughter. Catherine Linton was her maiden. Name a nurse. Now, if you've seen, he had a son, it seems. Question? Yes, he had one. He is dead. And that young lady, Mrs. Heathcliff, comma, is his widow. Yes. Where did she come from originally? Why, sir, she's my late master's daughter. Catherine Linton was her maiden name. And nurse, poor thing, I did wish Mr. Heathcliff would remove here, and then we might have been together again. What? Catherine Linton, I exclaimed, astonished, but a minute's reflection convinced me it was not my ghostly Catherine. Then I continued, my predecessor's name was Linton. It was. And who's that Earnshaw, Hareton Earnshaw, who lives with Mr. Heathcliff? Are they relations? No, he's the late Mrs. Linton's nephew. So I hope that you've gotten an idea how it has been written, that each dialogue has been written in an inverted comma. There were interruptions, interventions in the midst as well, but all were dialogues from different from different from one other. Or different from the other. And I would like to give you just a review about that. Dialogue is actually conversation. Okay, when something's said aloud, when you write dialogue, you're stating a person's exact words. I've told you the purpose, that there are a lot of purposes. It's a career. Then we've talked about how dialogue makes things important, whether you're writing, whether you're speaking. When writing dialogue starts a new paragraph, the first thing I told you was that whenever we start a dialogue, we will write each dialogue in a single line, in a fresh line. I gave you an example. Then we talked about that the speaker word should be set apart from that via inverted commas. Then we talked about a dialogue has to be started with a capital and has to be ended inside punctuation. Inside means that in inverted commas. आप कभी भी inverted comma के बाद full stop या comma नहीं लगाते हैं, ठीक है? Kindly remember this. ये बच्चे गलती करते हैं narration सीखते हुए. A comma separates the speaker text from the spoken words. We talked about, फिर हमने बात की किसकी interruption कैसे होती है, ठीक है? And then we've seen it.